guys, welcome to our channel Those Pretty Twins. So in this video I'm sharing my review on Loreal Paris Total Repair 5 shampoo and this conditioner. So if you guys are interested in this review, then keep on watching. So firstly, let's talk about the product information and all of this. So this is Loreal Paris Total Repair 5 Advanced Repairing Shampoo, and this is particularly for damaged hairs, and this is for rupees 135 and you get 192.5 ml of product. And if we talk about the conditioner, so this is Loreal Paris Total Repair 5 Rapid Reviver Deep Conditioner, 2 times repair with microceramide and for damaged hair, and this is for rupees 240 and you get 180 ml of the product. So this is the information. Now let's just see what the product claims. So the shampoo claims that it fights with 5 signs of damage, which is hair fall, dryness, roughness, dullness and split ends. These are all mentioned here, and this is what it claims. And the conditioner aims to give you deep conditioning and repair your split ends. This is what it claims. तो मैंने ये वाला शैम्पू इसलिए लिया क्योंकि मेरे को हेयर फॉल हो रहा था, एंड व्हेन आई रेड अबाउट दिस शैम्पू तो देन आई केम टू नो अबाउट इट्स क्लेम्स. सो it I thought the claims are promising enough because I've tried like the 2 variants of the L'Oreal Paris shampoo, which is the clay one and the 6 oil nourish shampoo, and these two just do what it claims to, and I just really love these shampoos and I just enjoy thoroughly. So I thought कि ये जो claim करता है वो भी this would give what it claims to. So I got really confident about using this shampoo. So मैंने इस shampoo को 1.5 मंथ तक यूज किया है, और ये इतना सारा खाली भी हो चुका है, सिर्फ इतना सा बचा है. तो सिंस मेरा हेयर फॉल हो रहा था तो आई थॉट कि मैं ये वाला यूज करूंगी, मेरा हेयर फॉल रुक जाएगा, डलनेस जो बालों में वो भी चली जाएगी, एंड स्प्लिट एंड्स खत्म हो जाएंगे, एंड मेरे हेयर काफी ज्यादा डैमेज है वो रिपेयर हो जाएंगे. आफ्टर आई स्टार्टेड यूजिंग दिस शैम्पू मेरा हेयर फॉल काफी ज्यादा और होने लग गया था. इट वॉज नॉट रिड्यूसिंग एट ऑल. फाइनली थॉट कि शायद मेरा हेयर फॉल इसी की वजह से इंक्रीज हुआ है, तो मैंने इसको बंद कर दिया यूज करना. और जब मैंने इसको बंद कर दिया यूज करना तो मेरे को ये पता चला कि मेरा हेयर फॉल वापस से रिड्यूस हो गया है. तो मेरे को ऐसा अश्योरेंस हो गया था कि शायद ये वाला शैम्पू मेरे बालों को सूट नहीं कर रहा है. दो ये आपके बालों को शाइनी और स्मूथ बनाता है, जो कि लॉरियल पेरिस के सारे शैम्पूज बनाते हैं. तो इसने कुछ ज्यादा अच्छे से काम नहीं किया मेरे बालों पे, एंड आई डिडंट got the result what I expected from it. So I got really disappointed. और इसका कंडीशनर की बात करें तो ये भी तो कुछ ज़्यादा खास नहीं करता है, सिर्फ आपके बालों को सॉफ्ट और शाइनी बनाएगा. ये भी आपके हेयर फॉल को रिड्यूस करने में कोई हेल्प नहीं करता है. इट माइट सूट यू, लेकिन ये मेरे को तो बिल्कुल भी ज़्यादा सूट नहीं करा है, इसलिए मैं अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दे रही हूँ. इट माइट सूट यू, इट माइट जस्ट गिव यू द रिजल्ट्स ऑफ लाइक द हेयर फॉल रिड्यूस कर सकता है आपका, लेकिन ये मेरा तो बिल्कुल भी ज्यादा नहीं. अगर आपके ऑयली स्कैल्प पे तो आपको ये वाला जरूर ट्राई करना चाहिए, क्योंकि ये आपके बालों में बहुत ज्यादा फ्रेशनेस ले आता है और काफी आपके बालों को एकदम से खिला और काफी ज्यादा फ्रेश रखता है फॉर 72 hours, एंड इट डेफिनेटली डू. एंड दिस पर्टिकुलर शैम्पू लॉरियल पेरिस 6 नरिश ऑयल शैम्पू आपके बालों को काफी ज्यादा शाइनी बनाएगा, बहुत ज्यादा हेल्दी बनाएगा, और आपको बहुत अच्छी केयर देगा ऑफ 6 फ्लावर ऑयल. सो दिस इज ऑल्सो रियली गुड. एंड बाकी आप पे सूट करता है. अगर आपने ये वाला शैम्पू यूज नहीं किया, अगर आप करना चाहते तो आई वुड सजेस्ट कि आप नहीं करें, बिकॉज इट्स नॉट गोना बी गिविंग यू द रिजल्ट, और ये पर्टिकुलरली आपके हेयर फॉल को तो रिड्यूस नहीं करेगा. सो दिस इज वॉट आई वॉन्टेड टू शेयर अबाउट दिस पर्टिकुलर शैम्पू. I really hope this review was helpful for you, and if it was helpful for you, then like this video, subscribe to our channel, and I will see you guys in my next video. Bye.